पीके स्टडी आई चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। तो आज आमर क्लास रहिबो प्रीवियस ईयर इंडियन स्टैटिस्टिक जीके। तो आपणकर जेकोसी एग्जाम पे आप प्रिपरेशन करुँच इंडियन स्टैटिस्टिक जीके मीन्स आपणर जहाँ भी जेकोसी एग्जाम भी आप देखूँ है सेंट्रल हो स्टेट गवर्नमेंट हो जी आपणकर एग्जाम अच्छी सबुथ ये क्वेश्चन माने आसी आप तो आपको नहीं गोटे कम्प्लीट करी प्रीवियस ईयर इंडियन स्टैटिस्टिक जीके गोटे क्लास आज आम करवा जोटा कि आपणकर सबुजा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस रे कौन ना कौन एग्जाम रे ये क्वेश्चन आपणकर आसी तो आम आपको भल कि प्रैक्टिस करवा क्वेश्चन आपणकर वन लिनियर टाइप रही कौन एमसीक्यू आपणकर रहिबो नाही। तो स्पीड अप करवा पेशेंस रहिबे आउ आराम से शुणिबे आंसर करने चेष्टा करेंगे। देखो फास्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच इंडियन स्टेट हैज इट्स मैक्सिमम एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर। तो मैक्सिमम एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर कौन हो पारिबो? व्हिच इंडियन स्टेट हैज इट्स मैक्सिमम एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर। तो ये हो कौन? मध्य प्रदेश हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आसीबो कौन? मध्य प्रदेश पर अरुणाचल प्रदेश आसीबो है। नेक्स्ट आसीबो कौन? छत्तीसगढ़ आसीबो। ओके तापर आसीबो कौन? आम स्टेट आसीबो ओडिशा। नेक्स्ट आसीबो तापर महाराष्ट्र। मिनिमम आपको 5 स्टेट्स मन रखार अच्छी मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ ओडिशा महाराष्ट्र। ओके नेक्स्ट अच्छी वन हुज मेमोरी नोबेल प्राइज अवार्डेड। ऑन हुज मेमोरी नोबेल प्राइज इज अवार्डेड। तो कौन हो ना आल्फ्रेड नोबेल। तो यहाँ गोटे जिनस पचारि पारे नोबेल प्राइज फास्ट केबे दिया जायतिला? तो 1901 हो जोटा कि नोबेल प्राइज आपनकर स्टार्ट होइतिला। ओके तापर आसिला कौन? को एकेडमी आपको दौर नोबेल प्राइज? तो स्वदेशी एकेडमी ऑफ साइंस आपको दब गोटे कौन नोबेल प्राइज। ओके व्हिच डेफिशिएंसी कॉज एनीमिया। तो को डेफिशिएंसी रे एनीमिया हुए? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो आयरन। व्हिच पोल इज नोन एज अंटार्कटिका और अर्थ। व्हिच पोल इज नोन एज अंटार्कटिका और ऑन अर्थ। तो यहाँ कौटा हो साउथ पोल है। तो लाटिट्यूड केते हो ना 90 डिग्री हो कौन लाटिट्यूड। नेक्स्ट गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु ऑफ वूम। तो गोपाल कृष्ण गोखले बा जीके गोखले कार पॉलिटिकल गुरु थिले? तो सी हो के ना महात्मा गांधी। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। तो फादर ऑफ मैथमेटिक्स किए जीवे ना आर्किमिडीज। तापर आसला कौन? व्हाट डज 4G मीन। तो 4G मीन्स आप कहले कौन बुझ? तो ये कौन ना फोर्थ जेनेरेशन ऑफ ब्रॉडबैंड सेलुलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी। ताको आमे कौन कहबा? 4G मीन कौन? नेक्स्ट आसला व्हाट डज कोविड-19 मीन्स। तो कोविड-19 मीन्स हो कौन ना कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019 है। जदि आपको कोविड-19 भाइरस पचारे तो कौन लिखे? सार्क कोव 2 है भाइरस ना मन रखिए एग्जाम आसे। नेक्स्ट आसला कुआलालंपुर इज द कैपिटल ऑफ व्हिच कंट्री। तो कुआलालंपुर हो का कैपिटल बोली पचार। तो आंसर हो कौन ना मालेशिया। नेक्स्ट आसला जय जवान जय किसान स्लोगान वाज गिवेन बाय व्हिच रिवोल्यूशनरी। तो जय जवान जय किसान तो स्लोगान किए देथिले? तो ये कौन लाल बहादुर शास्त्री। तो आप एलआई रे बर्तमान आसला क्वेश्चनटा लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर जो मैंने जानी थे शिफ्ट अनुसार एग्जाम होती। तो ये गोटे शिफ्ट आप एग्जाम ये आसी। नेक्स्ट आसला व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंकार ओल्ड नेम कौन हो? ये हो कौन साइलन। श्रीलंका आउ इंडिया पाक स्टेट द्वारा कौन होती अलग होती यहाँ भी मन रखिए। इन व्हिच स्टेट इंडियन बोट रेस इज मोस्ट पॉपुलर।
कौन हो ये हो केरला। तो ये जदि आपको पचारे बोट रेस रो नेम कौन जदि टॉप आसे क्वेश्चन तो ये लिखे कौन अन्नामुल्ला बोट रेस है ना गोटे जगह आसे कौन भल्ला काली है भल्ला काली। तो ये हो कौन बोट रेस रो नेम जोटा कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल रे सेलिब्रेशन पे ये हुए है। नेक्स्ट आसला हु प्रोड्यूस मलेरिया है हु प्रोड्यूसेस मलेरिया। तो ये हो कौन मस्क्यूटोस। तो मस्क्यूटो नाम कौन रखी मन ना ये एनोफिलस है एनोफिलिस मस्क्यूटो हो कौन वेक्टर ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर इन ए कंप्लीट पैक ऑफ कार्ड्स। तो गोटे पैक कार्ड रे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स केते हो तो ये 52। व्हाट इज द यंग वन ऑफ ए कैट कॉल्ड। तो कैट रो ऑफस्प्रिंग को आम कौन कहबा है ऑफस्प्रिंग है बा यंग वन ये हो कौन किटेन। हु इज नोन एज फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया किए जे फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया मिल्खा सिंह। ओके आंकर जदि आप डेट ऑफ बर्थ मन रखिपारे इजी आउरी 1929। नेक्स्ट लॉर्ड बुद्धा वाज born in which place। लॉर्ड बुद्धा वाज born in which place। तो ये कौन हो लुम्बिनी वन है लुम्बिनी वन मेन्स ना कंट्री हो कौन नेपाल हो नेपाल मन रखिए। नेक्स्ट आसला हु इज द भाइस रॉय व्हेन द जालियानवाला बाग मर्सरी टुक प्लेस। तो जालियाना बाग मर्सरी समय जनरल सॉरी भाइस रॉय किए थे। तो ये जी कौन ना लॉर्ड जेम्स फोर्ट। तांकर जी सिपाही थिला सी कौन ना जनरल राय है जे कि आदेश देता कौन फायरिंग पे जी आदेश देता सी हूँ कौन जनरल राय। नेक्स्ट आसला व्हिच एमिनेट पर्सन फाउट फॉर एवोल्यूशन ऑफ सती सिस्टम इन इंडिया। तो सती सिस्टम को विरोध किए करते फास्ट एवोल्यूशन ऑफ सती सिस्टम। तो ये जी कौन राजा राममोहन रॉय। नेक्स्ट आसला राइट द लॉन्गेस्ट रोड इन इंडिया। तो लॉन्गेस्ट रोड कौटा हो तो ये NH 44। तो यहाँ गोटे जिन मन रखिए जालियानवाला बाग मर्सरी डेट हो ना 13 एप्रिल 1919 वैशाखी पूर्णिमा रे ये आपणर इवेंट होता। नेक्स्ट हु इज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। पचाची हु इज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये जी कौन विश्वभूषण हरिश्चंद्र देती वर्तमान रिसेंटली किए अच्छा ना रिसेंटली अच्छा एस अब्दुल नजीर यहाँ प्रिवियसली थे है वर्तमान किए अच्छा एस अब्दुल नजीर बुझला ना 2223 रु माने चेंजेस हो जाइए। ओके हु इज द करेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो करेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया किए जी ना राजनाथ सिंह वर्तमान भी अच्छा। व्हेन एंड हु बिल्ट ताजमहल इन आग्रा। तो ताजमहल किए बनई आ केबे बनई तो हो कौन ना शाहजहाँ बनई टाइम पीरियड हो 1631 रु 1648। नेक्स्ट नेम ऑफ द प्लेयर हु स्कोर्ड 3 डबल सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट। तो 3 डबल सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट रे किए आसो रोहित शर्मा। नेक्स्ट हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना कौन हो ना ये प्रीवियसली थे चंद्रशेखर राव प्रीवियसली थे वर्तमान ए किए अच्छा रेवेन्था रेड्डी है मन रखिए रेवेन्था रेड्डी है वर्तमान के 2023 रु कौन कर कार्यभार हाथ को नहीं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ तेंदुलकर। तो ये जो कौन सचिन रमेश तेंदुलकर।
हाउ मेनी अवार्ड्स इंडिया गॉट इन पारा ओलंपिक्स 2020? हाउ मेनी अवार्ड्स इंडिया गॉट इन पारा ओलंपिक 2020? केते हिजिबो? तो ये कौन 19 मेडल्स। ओके, तो यहाँ कौटे होता पाराओलंपिक ना ये होता कौटे टोकियो है। तो देखो ये गोटे जिन गोटे मन रखिए कौन ना टोटाल 5 गोल्ड है, 8 सिल्वर आ कौन 6 ब्रोंज अच्छी, कारण क्वेश्चन भी आसीपे टोटाल गोल्ड्स केते सिल्वर केते ब्रोंज केते ये मन रखार अच्छी। पोजिशन रे केते थिला ना 24th पोजिशन रे इंडिया थिला है। पोजिशन मन रखिले, टोटाल नंबर ऑफ मेडल मन रखिले, प्लेस मन रखिले टोकियो, कैटेगरी अनुसार केतेटा मेडल आपणर मिली। नेक्स्ट, हाउ मेनी पद्मश्री अवार्ड हैव बीन गिवन टू द रिसेप्शन फॉर द ईयर 2021 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? केते हिजिबो पद्मश्री? देख ये देख 325 पीपुल लिखाई, ये टिके रंग अच्छे है, ये मिस्टेक अच्छी प्रिंटिंग मिस्टेक। टोटाल आप मन रखिए कौन ना 7 पद्म विभूषण है, 7 पद्म विभूषण, 10 हूँ कौन पद्म भूषण, आ 102 हो कौन पद्मश्री। ओके, ये आप मन रखिए आ कि नहीं। नेक्स्ट जीवा, हाउ मेनी स्पोर्ट्स पर्सन गॉट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2021? हाउ मेनी स्पोर्ट्स पर्सन गॉट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2021? तो ये जी के ना 12 स्पोर्ट्स पर्सन, जोटा कि आपणकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड आर प्रीवियसली नेम कौन थिला ना ये जी कौन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट आसला कौन, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हाइट केते हिजिबो 182 मीटर और 597 फीट। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीआई? ए साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स। तो ये हो कौन ना जोग्राफिकल इंडिकेशन है। नेम द हाइस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, नेम द हाइस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। तो कौन हो ये हो कौन माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। नेक्स्ट, नेम द एंटी अपेर्थीड हीरो हु डाइड इन 2013 at the age of 95, at the age of 95। तो ये जो कौन ना नेल्सन मैंडेला, नेल्सन मैंडेला। ओके, तो यहाँ गोटे जिन मन रखिए कौन ना नेल्सन मैंडेला होती कौन ना फास्ट डेमोक्रेटिकली प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ओके, ईयर के ना 1994 ରୁ 1999 पर्यटन सी कौन थे ना प्रेसिडेंट पदवी रे सर्व करथिले। आसला कौन बुक्स बाय नेल्सन मैंडेला, ये जिनसा पचारे आपणकर है। तो गुड़ाए बुक तांकर थिला है, से भितर गोटे हूँ कौन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आ कौन हो पार तो आप गोटे ही मन रखु, कारण लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये हूँ तार कौन गोटे ऑटोबायोग्राफी। ओके, ये हूँ गोटे ऑटोबायोग्राफी, तो यहाँ आप इम्पोर्टाट हो। नेक्स्ट आसला कौन, हु इज द ट्रांसजेंडर गॉट द पद्मश्री अवार्ड फॉर द ईयर 2020-21? तो ये किए ना मजमा जोगित है। नेक्स्ट आसला, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी व्हिच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ड्राफ्टिंग कमिटी
हेड किए थिले बा चेयरपर्सन किए थिले जो कॉन्स्टिट्यूशन आपण बनाइतिला बा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाइतिला ताहरे गुडाए कमिटी थिला तो से भितर ड्राफ्टिंग कमिटी रो हेड किए थिले बा चेयरपर्सन किए थिले तो ये जो कौन बी आर अम्बेडकर टोटाल 7 पर्सन है अम्बेडकर को मिसेगी पर्सन भी पचारि पारे है नेम द किंग हु टुक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्प्रेडिंग बुद्धिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड तो किए जीवे ना एम्पायर अशोका ताके को डायनेस्टी थिले ये जीव कौन मयूरियन डायनेस्टी है कलिंग वार 261 BC ये जिनस मन रखा आंक विषय नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट कौन हो पार तो ये कौन अंटार्कटिक डेजर्ट व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन तो लार्जेस्ट ओशन कौन हो ये पैसिफिक ओशन नेक्स्ट नेम द इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हु वोन ए गोल्ड मेडल इन द टोक्यो पैरालंपिक गेम्स तो ये कौन ना प्रमोद भगत जे कि बैडमिंटन सहित जड़ित नेम द विनर ऑफ वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप 2021 तो ये न्यूजीलैंड 2022 रे कि आसो ऑस्ट्रेलिया आसो तापर नेक्स्ट है तापर देखिबा हु रेज्ड द स्लोगन स्वराज मेरा जन्म सिद्धि अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा ये कहते यहाँ स्वराज इज माई बार्थ राइट एंड आई टुक इट ये जी कौन बाल गंगाधर तिलक ये जड़े कौन एक्सट्रीमिस्ट थे है बुझला नेक्स्ट नेम द ब्लड ग्रुप हु इज यूनिवर्सल ब्लड रिसेप्टेड तो ये कौन ए बी पॉजिटिव नेम द फास्ट वुमेन इन इंडिया फुली सर्विस तो फास्ट वुमेन IPS तो किए जी तो ये कौन ना किरण बेदी तापर आगे कौन थे ना 1972 हो इयर जो कि आगे कौन पाई IPS पाई है तापर आसला कौन पॉलिटिकल कैरियर 24th लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी बुझला एति जिनस आप मन रखार अच्छी ना केबरू केबे ना 2016 रु 2021 बुझला तो सी कौन थे ना 24th लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी 2016 रु 2020 व्हिच कंट्री गिफ्टेड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी टू USA तो ये कौन ना फ्रांस देखो लिखाई कौन द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज मेड विथ कपर बट ड्यू टू द ऑक्सीडेशन इट चेंजेस टू ग्रीन बुझला प्रकृत में कपर किंतु ये कौन है ऑक्सीडेशन जोगु ग्रीन हो जाए नेक्स्ट इन व्हिच ओशन बरमुंडा ट्रायंगल रीजन इज लोकेटेड इन व्हिच ओशन बरमुंडा ट्रायंगल रीजन इज लोकेटेड तो ये कौन नॉर्थ अटलांटिक ओशन ओके नेक्स्ट आसला which of the scheme launched by PM of India is to provide a monthly pension of 3,000 for the enrolled or unorganized sector worker during their old age तो ओल्ड एज पे टोटाल 3,000 मंथली पेंशन एटा को योजना रे अंतर्भुक्त तो ये अटल पेंशन योजना ओके मन रखिए कौन अटल पेंशन योजना तो गोटे जिनस मन रखिए कौन ना अटल पेंशन योजना लॉन्च डेट इंपोर्टेंट स्कीम्स आपणर क्लास है जो मैंने इंपोर्टेंट स्कीम्स देखी ना वीडियोटा कंप्लीटली देखिए तो आपन को सेटा कौन हम हेल्पफुल हो 9th May 2015 ये होता कौन स्कीम आसला मिनिस्ट्री हो कौन फाइनेंस मिनिस्ट्री है लॉन्च कि करते ना लॉन्च बाय PM नरेंद्र मोदी ओके तो एति जिनस मन रखिए नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च्ड ऑन November 5, 2019
कौन हो पार तो ये हो कौन वंदे भारत एक्सप्रेस तो ये फास्ट कौटू कौटू स्टार्टिंग होता तो ये आप फास्ट कौन ना वाराणसी टू न्यू दिल्ली है फास्ट वंदे भारत पचारि पारे मिनिमम 10 पर्यंत पचार फास्ट वंदे भारत कोड़ी सेकेंड कोड़ी होता थर्ड कोड़ी होता मिनिमम 10 मन रखार अच्छे तो फास्ट हो कौन ना वाराणसी टू न्यू दिल्ली तो मैक्सिमम स्पीड के 160 km/h है मन रखिए द इंडिया's longest 300 meter single lane steel cable suspension bridge is crossing over which river? The India's longest 300 meter single lane steel cable suspension bridge is crossing over which river? तो ये जो कौन रिवर सियांग रिवर है सियांग रिवर हो करेक्ट आंसर स्टेट हो कौन कहीपर तो स्टेट हो मन रखिए कौन अरुणाचल प्रदेश नेक्स्ट व्हिच टीम वोन इरानी कप 2018 टू 2019 18-19 इरानी कप कि जीति इरानी कप तो ये जो कौन ना विदर्भा है नेक्स्ट हु वोन ऑल इंग्लैंड मेन्स सिंगल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 तो ये जो कौन ना केंटो मोमेंटो है केंटो मोमोटो व्हिच सिटी ऑफ इंडिया रिसीव्ड स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2019 तो ये जो कौन इंडोर 2023 रे भी कौन इंडोर आगा है टोटाल 6th टाइम ये कौन कर कंजिक्यूटिवली विन करके आसुचे वर्तमान बोलते 7th टाइम है लगे इन व्हिच फील्ड अशोक लक्ष्मणेरो कुकाडे रिसीव्ड पद्म भूषण अवार्ड इन द ईयर 2019 तो अशोक लक्ष्मणेरो कुकाडी को फील्ड रे पद्म भूषण पाई जोटा कि 2019 रे तो ये जो कौन मेडिकल फील्ड रे नेक्स्ट व्हिच डे वी सेलिब्रेट लीगल सर्विस अथॉरिटी डे लीगल सर्विस अथॉरिटी डे तो ये जो कौन 9th नवेम्बर तो लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट ये गोटे एक्ट अच्छी तो एक्ट केबे आसला ना 1927 रे एक्ट आसला बुझला किंतु आपको ऑफिशियली केते एनफोर्स कराइला माने लागू केबे होइतिला ना 1995 यो होचे एडिशनल डाटा जदि आपण मन रखिया चाहउछंदी बेस्ट हु हैज रिटन द बुक टाइटल एज ड्राइवर द बुक टाइटल्ड ड्राइवर रिटन बाय whom कौन हो पार ना गैरेट है 1922 रे होता कौन पब्लिश होता द नेशनल फ्लावर ऑफ जर्मनी तो नेशनल फ्लावर ऑफ जर्मनी कौन हो ना ग्रीन कॉर्न नेक्स्ट व्हिच इज वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट रोडेंट तो स्मॉलेस्ट रोडेंट किए तो ये पिग्मी जर्वा नेक्स्ट ए डजन इज 12 हाउ मेनी ए ग्रॉस यदि गोटे डजन 12 हुए ताले गोटे ग्रॉस कौन हम तो 144 इन व्हिच काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट है काजीरंगा नेशनल पार्क तो ईयर के सॉरी स्टेट कौन हो आसाम हो नेक्स्ट बायोलॉजिकल साइंस दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेचर इज कॉल्ड ताको आम कौन कहबा ना इकोलॉजी बोली आम कहबा नेक्स्ट आसला NH1 रोड कनेक्ट व्हिच स्टेट्स तो NH1 को स्टेट देकी जाइए ये जो कौन हिमाचल प्रदेश पंजाब दिल्ली उत्तर प्रदेश हरियाणा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु स्टेट मन रखिए खाली पचारि पारे ऑप्शन रे 4टा देथिबो को स्टेट देकी जाइए
क्रिमेटोरियम ऑफ इंदिरा गांधी इज कॉल्ड। तो इंदिरा गांधी को समाधि स्थली को आम कौन कहवा? तो ये कौन ना शक्ति स्थल, जोटा कि दिल्ली रे अच्छी। ओके, कारण सी आयरन लेडी बोली कहला है आयरन लेडी, तो तांको समाधि स्थल दिखाई शक्ति स्थल। हु इज द 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई? तो 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई के जो है ना शक्तिकांत दास। फ्लैग फ्लाउन एट हाफ मेस्ट इज ए सिंबल ऑफ व्हाट? तो फ्लैग फ्लाउन एट हाफ मेस्ट, तो सिंबलटा कहार? तो मन रखिए कौन ना रेस्पेक्ट, वार्निंग और डिस्ट्रेस। नेक्स्ट, हु वाज ऑनर्ड विथ मेटोलिमा टाइटल? मेटोलिमा टाइटल, तो ये कौन एमसी मेरी कॉम। नेक्स्ट, व्हिच इंडियन जर्नलिस्ट हैज won द 2018 लंडन प्रेस फ्रीडम अवार्ड फॉर करेज? तो ये कौन ना स्वती चतुर्वेदी। नेक्स्ट, द फास्ट एवर बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2018 हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड। तो समुद्र शक्ति नेवल एक्सरसाइज को देश मध्य हुए? तो इंडिया और इंडोनेशिया। नेक्स्ट, इंडियन ओरिजिन वुमेन हु हैज बीन रिसेंटली नेम्ड एज साउथ अफ्रीका's फर्स्ट फीमेल चीफ प्रोसिक्यूटर इज? तो सी कौन ना लॉयर सामिलीला अथोई। नेक्स्ट आसला, व्हेन डिड मदर टेरेसा विन द नोबेल पीस प्राइज? तो को मसीह मदर टेरेसा नोबेल पीस प्राइज पाई? तो ये रही कौन 1979। नेक्स्ट, इन विच सिटी केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड? तो केम्पागोड़ा कौटे हो? बेंगलोर। नेक्स्ट आसब, व्हाट इज द करेन्सी ऑफ चिली? तो चिल्र करेन्सी कौन हो? चिलियन पेसो। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन वुमेन एसोसिएशन? तो इंडियन वुमेन एसोसिएशन जोटा कि मद्रास रे 1917 रे, तर फाउंडर किए जी ना आनी बेसेंट। नेक्स्ट आसला, हुज पॉपुलर नेम इज मैन ऑफ ब्लड? मैन ऑफ ब्लड किए जी ऑटो von बिस्मार्क। नेक्स्ट, व्हिच आर्किटेक्ट डिजाइन्ड एंड द सिटी ऑफ चंडीगढ़? हाँ, मेन है कौन ना चंडीगढ़ डिजाइन किए करते से पचार। तो ली कर्वेसर, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे है मन रखा। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज? इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज कौन हो ना भूपेन हजारिका सेतु। नेक्स्ट, द फास्ट यूरेनियम माइन ऑफ इंडिया द जादूगुड़ा माइन आर लोकेटेड इन? तो जादूगुड़ा माइन आपणर कोड अच्छी, ये कौन झारखंड फास्ट यूरेनियम माइन। ओके, ये जिन मन रखिए। नेक्स्ट, हु वाज द फास्ट इंडियन प्रेसिडेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस? फास्ट प्रेसिडेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस के जी ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? नेक्स्ट, नेम द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? तो ये हीराकुद डैम। ओके, तो ये हीराकुद डैम। तो यार एस्टाब्लिश्ड डैम माने एस्टाब्लिश्ड डेट जब पचारे तो ये कौन 12 जनवरी 1957 बाय जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए कौन फाउंडर ऑफ शांति निकेतन? तो किए जी तो ये कौन महर्षि देवेंद्र ठाकुर है। रविंद्रनाथ ठाकुर लिखिदेनि भूल हो महर्षि देवेंद्र ठाकुर। नेक्स्ट आसला कौन फादर ऑफ भूदान मूवमेंट? तो भूदान मूवमेंट फादर ऑफ भूदान मूवमेंट। तो ये कौन विनोबा भावे। ईयर मन रखिए 1951 पचारे
भूदान मूवमेंट केबे स्टार्ट होता। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड, तो ये जीव कौन क्लाइमेटोलॉजी। नेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ केरला, तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ केरला कौन हो ना मालायालम है। नेक्स्ट आसला हु इन्वेंटेड पेंसिलिन, तो पेंसिलिन किए बाहर करते, तो ये जो कौन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट आसला इन विच स्टेट ऑफ इंडिया नाथुला पास सिचुएटेड्स, तो नाथुला पास आपनर को स्टेट अच्छी, तो ये जो कौन सिक्किम। नेक्स्ट हु इज द प्रेजेंट कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम, प्रेजेंट कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम किए जीव, तो थिले किए ना मनप्रीत सिंह प्रीवियसली कैप्टन थिले, वर्तमान अच्छा किए हरमनप्रीत कौन हो हरमनप्रीत सिंह है। हरमनप्रीत सिंह अच्छे वर्तमान कैप्टन। जदि पचारे प्रेजेंट कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम कौन हो पार, तो ये कौन ना शालिमा टीटी है, शालिमा टीटी। ओके नेक्स्ट आसो व्हिच मेटल इज नोन एज क्विक सिल्वर एंड व्हाई सच मेटल इज ऑफन स्टोर्ड इन आयरन कंटेनर, तो क्विक सिल्वर मन रखिए मर्क्यूरी। बिटवीन whom the battle of Hydaspes was fought and in the bank of which river, है battle of Hydaspes found between whom and in which river कौन हो, तो ये कौन ना अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड फोरस। रिवर हो कौन ना झेलम। ओके इयर के 326 BC हो इयर, ये जिनस मन रखिए। हु इज द अवार्ड विथ टाइटल माइटेस्ट प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म, तो माइटेस्ट प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म किए ना बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट आसब हु इज द विनर ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 2019, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 ये, तो ये कौन अमिताभ बच्चन। जदि मु एबे भी गुड़ाए विनर आसिले है, जदि पचारे 2020 रे किए, तो किए जी ये आशा पारेख है, आशा पारेख हो कौन 2020। जदि 2021 पचारे, तो ये जी कौन वाहिदा रहमान है, वाहिदा रहमान हो कौन 2021 वाहिदा रहमान, 2020 हूँ कौन आशा पारेख। हाँ शुण पे ये टिके करेक्शन कर दियो है, यहाँ कौन अच्छी टिके मिस्टेक है। अवार्ड कौन जे जो कोरोना रे जो डिले है कि या नहीं टिके मिस्टेक अच्छी। देख 2019 रे आपण रखिए ना रजनीकांत है, 2019 रे रजनीकांत, 2018 रे जी किए अमिताभ बच्चन जी कि 66 नंबर है। अमिताभ बच्चन होती कौन 66, रजनीकांत के ना 67 रिसेप्शनिस्ट है, माने 67 नंबर। तापर आसो कौन ना 2020 आसो कौन ना आशा पारेख है, तापर आसो कौन ना 2021 आउ थे पुणी किए ना रजनीकांत, बुझला। देखो 67 होता 2020 ये हो कौन 68, पुणी रजनीकांत आउ थे ये कौन 69, तापर आउ थे कौन ना 2022 पुणी आउ थे आसो कौन आशा पारेख जे 70th हो, बुझला। तापर आउ थे 2021 रजनीकांत लिखिले आम ठीक से है, तो 2022 आशा पारेख हो गले, पुणी 2023 किए आसो ना रेखा,
है इंडस्ट्री कौन हिंदी इंडस्ट्री आके 71st बुझला रेखा सॉरी 73 है नेक्स्ट आसवे कौन ना 2024 किए ना शाहरुख खान ओके तो ये जिन आप मन रखार अच्छे मिनिमम आप 2018 रु 2024 पर्यटन मन रखिए ओके ये जब मन रखिले हो किसी नहीं नेक्स्ट हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ इंडिया तो फादर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ इंडिया हो के लॉर्ड कॉर्नवालिस नेक्स्ट हु हैड गिवन द कॉल फॉर एवर ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया तो ये हो कौन एम एस स्वामीनाथन तो ये इंडिया रे होचनी कौन एवरग्रीन रिवोल्यूशन है नेक्स्ट आसला हु इज द फास्ट लोकपाल ऑफ द कंट्री द फास्ट लोकपाल ऑफ कंट्री किए फास्ट लोकपाल ऑफ द कंट्री तो ये कौन ना जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष नेक्स्ट व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा तो मेंबर ऑफ लोकसभा मिनिमम एज के दरकार 25 एज नेक्स्ट हु इज द फास्ट चीफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया तो फास्ट सीडीएस किए ना विपिन रावत एवं किए अच्छा ना अनिल चौहान नेक्स्ट हु इज द करेंट नेशनल सिक्यूरीटी एडवाइजर एनएसए वर्तमान एनएसए किए अच्छा करेंट नेशनल सिक्यूरीटी एडवाइजर तो ये कौन अजित दोवल नेक्स्ट विच इज द लार्जेस्ट सालाइन एंड लेगुन लेक ऑफ इंडिया तो ये कौन ना चिलिका लेक नेक्स्ट आसला निक नेम ऑफ जयप्रकाश नारायण जेपी और कौन लोकनायक नेक्स्ट आसला हु इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ऑफ इंडियन पार्लियामेंट तो ये कौन ना द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट आसला व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ वोटर इन इंडिया व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ वोटर इन इंडिया तो ये कौन 18 ईयर तो आप आमेंडमेंट एक्ट के आसो ना 61st आमेंडमेंट एक्ट जोटा कि 1988 आसी तो एक्ट अनुसार कौन ना वोटिंग एज 21 रु रेड्यूस कराला के 18 ईयर ओके देखो लिखाई लोअर टू द 18 ईयर इन 1988 नेक्स्ट हु इज द फास्ट फीमेल गवर्नर ऑफ स्टेट फ्री इंडिया तो कौन हो हु इज द फास्ट फीमेल गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया तो ये क्यों सरोजिनी नायडू बुझला फास्ट वुमेन गवर्नर तो को स्टेट हो ना उत्तर प्रदेश हो स्टेट ईयर के 15 अगस्त 1947 टू 2 मार्च 1949 स्टेट आपण पे इम्पोर्टाट ना उत्तर प्रदेश आगे कौन थे फास्ट फीमेल गवर्नर आउ देशर मध्य कौन जी फास्ट फीमेल गवर्नर नेक्स्ट आसो हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल तो ये कौन ना सर आइजैक न्यूटन नेक्स्ट NH-15 कनेक्ट्स विच मेजर 2 cities ऑफ इंडिया ये कौन सामखिलाई ऑफ गुजरात टू पठानकोट इन पंजाब नेक्स्ट हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो ये कौन ना निर्मला सीतारामन ओके नेक्स्ट नेम द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ इंडिया तो ये कौन ना परमवीर चक्र नेक्स्ट विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी तो लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी कौटा हो ना फीमर नेक्स्ट आसला व्हाट आर द 4 वेदास तो 4टा वेद को आपको पचार कौन कौन वेद हो तो ये कौन ऋग्वेदा सामवेदा यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा वेयर गौतम बुद्धा अटेंड निर्वाण कोड आप अटेंड करते गौतम बुद्धा तो ये कौन ना बोध गया नेक्स्ट विच बैंक इज द बैंकर्स ऑफ बैंक कौन हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 ईयर
नेशनलाइज केबे 1949 ए तीन जिनस मन रखिए हु इज द सीईओ ऑफ गूगल गूगल रो सीईओ के जिवे ना सुंदर पिचाई पेनाल्टी कॉर्नर इज एसोसिएटेड विथ व्हिच गेम हॉकी हे परिबो फुटबॉल हे परिबो हला ऑप्शन अनुसार मार्किंग करिवे फुटबॉल देथिबो बोले हॉकी दे नथिबो हॉकी देथिबो बोले फुटबॉल दे नथिबो हु इज द कॉल्ड नाइटिंगेल ऑफ इंडिया तो ये जिवे कोन ना सरोजिनी नायडू व्हाट इज द होली बुक ऑफ जैनिज्म तो जैनिज्म को पवित्र ग्रंथ कौन तो ये कौन ना द अगमस नेक्स्ट कथकली इज द क्लासिकल डांस ऑफ व्हिच स्टेट तो कथकली कार क्लासिकल डांस हो कौ स्टेट रो तो ये केरला कथक हो कौन उत्तर प्रदेश रो कन्फ्यूजन नहीं बिहू इज द फोक डांस ऑफ व्हिच स्टेट बिहू इज द फोक डांस ऑफ व्हिच स्टेट तो ये कौन आसाम नेक्स्ट आसला इन व्हिच ईयर द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज फाउट तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के 1914 रु 1918 द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय व्हिच इंस्ट्रूमेंट देखो वेलोसिटी ऑफ विंड पचार नॉट डायरेक्शन तो ये कौन एनीमोमीटर व्हाट इज द टाइम टेक्स टू रीच मून लाइट टू अर्थ तो मून लाइट अर्थ को आसवा टोटाल टाइम केते निये तो ये कौन 1.3 सेकेंड्स नेक्स्ट व्हिच प्लैनेट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट तो ब्लू प्लैनेट किए अर्थ व्हाट आर रिगार्डेड एज 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ एटम तो 3टा बेसिक कंपोनेंट ऑफ एटम कौन हो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट इज राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया फंडामेंटल राइट और लीगल राइट तो राइट टू प्रॉपर्टी हो कौन गोटे लीगल राइट है आर्टिकल नेक्स्ट ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया तो ईटानगर कौन हो अरुणाचल प्रदेश 10th डिसेम्बर ऑफ एवरी ईयर इज ऑब्जर्व एज व्हिच डे तो ह्यूमन राइट डे हो कौन 10th डिसेम्बर नेम द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम तो ये कौन जुपिटर सैटेलाइट ऑफ जुपिटर मन पचारे कौन हो पार तो ये कौन गायनामेट है सब बृहत सैटेलाइट है गोटे ही इंपोर्टाट मन रखा दरकार यहाँ व्हिच सिटी इन इंडिया इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोमती तो गोमती रिवर पाखरे किए अच्छी लखनऊ अच्छी इंपोर्टाट सिटीज एंड रिवर फ्लोइंग है इंपोर्टाट गोटे चैप्टर यहाँ पढ़ी जी कंट्री माने आउट ऑफ कंट्री आसीपे है लंडन थेब्स नदी एमती भी आसीपे है निज देशर पढ़ार अच्छी प्लस कौन वर्ल्ड भी पढ़ार अच्छी नेक्स्ट अर्जुन अवार्ड इज गिविंग फॉर रेंडरिंग व्हाट सर्विस तो अर्जुन अवार्ड कमी दि जाए तो कमी दिए ना स्पोर्ट्स ऑफ गेम्स रे दिया जाए अर्जुन अवार्ड हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले इन ए कबड्डी गेम इन वन साइड तो गोटे साइड रे कबड्डी प्लेयर केते हिजबे ना 7 प्लेयर्स रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ व्हिच गेम तो हिजबे कौन क्रिकेट हु इज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर तो बाबर ईयर हिजबे केते 1526 हु इज पर्सनालिटी इन इंडिया हिस्ट्री पॉपुलरली नोन एज लोकमान्य तो लोकमान्य आम क्या कहवा बाल गंगाधर तिलक व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 ए कौन हो एजुकेशन व्हिच ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ द स्टडी ऑफ हार्ट हो कार्डियोलॉजी नाइट्रिक ऑक्साइड इज अदरवाइज नोन एज नाइट्रिक ऑक्साइड को आम कौन कह नाइट्रोजन मोनोक्साइड नेक्स्ट व्हिच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग डे तो प्लांट द्वारा कौन हम ना ऑक्सीजन जोड़ा कि ह्यूमन बीइंग पे मोस्टली नेसेसरी हु इज द डिस्कवरर ऑफ सी रूट टू इंडिया तो ये कौन ना भास्को ड गामा 1498
भारत को आसी ओके नेक्स्ट हु इज द फास्ट इंडियन मैन इन स्पेस तो फास्ट इंडियन मैन इन स्पेस राकेश शर्मा नेक्स्ट हु इज द ऑथर ऑफ मेघदूता मेघदूतर ऑथर किए जे ना कालिदास नेक्स्ट हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए तो ये जो कौन ना कमला हरीश तो ये होचनी कौन इंडियन ओरिजिन ओके इन व्हिच सिटी द स्काई ट्री लोकेटेड तो स्काई ट्री कोड़े जीवो ना टोकियो व्हिच कंट्री शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ इंडिया व्हिच कंट्री शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ इंडिया तो ये जीवो कौन बांग्लादेश 4096 किलोमीटर व्हिच नेशनल हाईवे कनेक्ट दिल्ली एंड मुंबई तो ये जो कौन नेशनल हाईवे 8 व्हिच कंट्री लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड किए जीवो चाइना इन व्हिच ईयर द क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय एम के गांधी मोहनचंद करमचंद गांधी बा महात्मा गांधी ईयर है 1942 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीसीआई तो बीसीसीआई जोटा कि गोटे क्रिकेटिंग बॉडी भारतर बा क्रिकेटिंग कंट्रोल बॉडी कौन हो ना द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ओके हु इज द ऑथर ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस ये कौन ना विलियम शेक्सपियर नेक्स्ट हु इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमी फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक तो ये कौन अमर्त्य सेन 1998 हो कौन ईयर जोटा कि ताके नोबेल प्राइज पाइते लिखाई देख इकोनॉमिक्स 1998 सेसिमोग्राफी इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ व्हाट तो सेसिमोग्राफी यूजेस कौन ना अर्थक्वेक को डिटेंशन करवा नेम द कंट्री व्हिच इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन किए जीवो ना जापान व्हिच ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज तो ये कौन एस्ट्रोनॉमी हु इज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन हु इज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन किए जीवो डॉक्टर मनोज सोनी ओके ताके डेट के बड़ू ना 16/5/2023 रु आके चेयरमैन रो असंती वर्तमान पर्यंत है नेक्स्ट इंडिया फर्स्ट एवर नेशनल पुलिस म्यूजियम एस्टाब्लिश्ड इन व्हिच सिटी फर्स्ट एवर नेशनल पुलिस म्यूजियम तो ये न्यू दिल्ली महात्मा गांधी फाउंडेड व्हिच न्यूज़पेपर इन 1903 एट साउथ अफ्रीका तो ये कौन इंडियन ओपिनियन बाय महात्मा गांधी एट साउथ अफ्रीका इन 1903 1903 व्हिच इंडिया इज द ओनली विनर ऑफ स्पेशल ऑस्कर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा ऑफ फार तो सत्यजीत रे होचंदी कौन तो इंडियन जड़े जे कि कौन करते ना स्पेशल ऑस्कर पाई नेक्स्ट व्हिच इज द हाउस वेयर चेयरपर्सन इज नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस तो ये कौन ना राज्यसभा इन व्हिच ईयर आर्टिकल 370 वाज एनेक्टेड इन व्हिच ईयर आर्टिकल 370 वाज एनेक्टेड तो ये कौन ना अक्टोबर 1949 who has written the book wake of india means book के लिखते ना Annie Besant है Annie Besant Annie नहीं Annie Besant in which year Alexander invented India so 326 BC है next who is the first person to declare as fugitive economic offender under the new fugitive economic offender act
2018 फुगिटिव मीन्स कौन जी लॉ को डरिकी पलाए है ये जो कौन विजय माल्या which artist is associated with the Bollywood number हावा हवाई तो ये जो कौन ना श्रीदेवी which with which sports मेरी कम एसोसिएटेड तो मेरी कम को स्पोर्ट्स सहित एसोसिएटेड तो बॉक्सिंग which city is referred as the gateway of India कोड अच्छी मुंबई नेक्स्ट what does the acronym NASA stands for NASA रो फुल फॉर्म कौन पचार नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा फाउंडेड ईयर पचारि पारे कौन हो पार तो हो कौन 29 जुलाई 1958 आम देशर भी स्पेस एजेन्सी अच्छी इसरो फाउंडेशन के ना 15 अगस्त ईयर हो कौन 1969 ओके व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर कॉम्पिटिंग इन द ओलंपिक गेम्स तो ये कौन सी स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं व्हिच इज द लार्जेस्ट आर्दन डैम इन एशिया तो ये कौन हीराकुद डैम व्हिच रिवॉल्यूशन इज नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तो ये कौन इंडियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 तो फेमस स्लोगान कौन आसो भितर मारो फिरंगियों को बाय मंगल पांडे नेक्स्ट व्हिच स्टेट इज नोन एज द सुगर बाउल ऑफ इंडिया के जीव उत्तर प्रदेश व्हाट डज द एक्रोनॉमी एटीएम स्टैंड फॉर एटीएम रो फुल फॉर्म कौन हो पार ऑटोमेटेड टेलर मशीन है हु इज नोन एज द इंडियन मत्स्यवेली ये जीव कौन कौटल्य व्हिच स्टेट हैज अग्रतला एज इट्स कैपिटल अग्रतला को स्टेट रो कैपिटल ये जीव त्रिपुरा हु इज नोन एज द मैन ऑफ पीस के जीवे लाल बहादुर शास्त्री इज द ओनली पीएम हु डाइड आउटसाइड द नेशन है व्हिच कंट्री विल होस्ट आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 तो ये जो इंग्लैंड नेक्स्ट हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया के जीवे तो ये थिले कौन एडमिरल आर हरिकुमार थिले प्रीवियसली वर्तमान किए अच्छा वर्तमान अच्छा ना मन रखिए एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी है मन रखिए है वर्तमान अच्छा कौन दिनेश के त्रिपाठी नेक्स्ट हु इज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल वर्तमान डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन सी पद ना है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया तो इंडोनेशिया हूँ जाकार्ता आर नुआ नाम हो कौन हे नूरजहां है नुआ कैपिटल नूरजहां एनीमिया डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन तो एनीमिया कम हुए ना आयरन डेफिशिएंसी रे हु इन्वेंटेड कैमेरा किए बाहर करते तो ये जो कौन निशिफोरी निप्सी नेक्स्ट हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर ऑफ यूएनओ तो यूएनओ ऑफिशियल लैंग्वेज केतटा अच्छी तो ये 6 कौन ना इंग्लिश फ्रेंच रशियन स्पेनिश चाइनीज अरेबिक व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आइलैंड ये जो कौन रिकजेविक है रेकजेविक व्हिच इज द लॉन्गेस्ट सिविलियन रेलवे लाइन्स इन द वर्ल्ड Which is the longest civilian railway lines in the world? तो ये जो कौन ट्रांस साइबेरियन रेलवे तो ये तो टोटल कौन कोड़ी अच्छी ना मस्को ठू कोड़े व्लाडिवोस्टक है
ଭ୍ଲାଡିଭୋଷ୍ଟକ୍ ହେଲା ଭ୍ଲାଡିଭୋଷ୍ଟକ୍ ମସ୍କୋ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଭ୍ଲାଡିଭୋଷ୍ଟକ୍ ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲ୍ ଲେନ୍ଥ। ଯଦି ଲେନ୍ଥ ପଚାରେ ତ ଲେନ୍ଥ କେତେ ହେଇଯିବ 9289 କିଲୋମିଟର। ମାଇଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ହେବ 5772 ମାଇଲ୍ସ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କରେନ୍ସି ଅଫ୍ ପୋଲାଣ୍ଡ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କରେନ୍ସି ଅଫ୍ ପୋଲାଣ୍ଡ ତ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପୋଲିଶ ଜେଲୋଟି ହେଲା ପୋଲିଶ ଜେଲୋଟି। ନେକ୍ସଟ ହୁ ୱନ୍ ଦ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଇନ୍ ଲିଟରେଚର ଇନ୍ ଦ ଇୟର 2019 ତ ହେଇଯିବେ କ'ଣ ପିଟର ହେଣ୍ଡକି। ତ ଏବେ ବି ଯଦି ଆସିଛି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆପଣ ତାକୁ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ନାଟୋ। ନାଟୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ନାଟୋ। କ'ଣ ହେଇପାରିବ ତ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଦ ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସର୍ଭିଂ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପବନ କୁମାର ଚାମଲିଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ ଆମର କ'ଣ ଆସିବେ କି which country launched aerial bombardment in Syria following the withdrawal of US troops from Syria ତ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ତୁର୍କିଶ। who discovered the small pox vaccine ତ ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ ତ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଏଡୱାର୍ଡ ଜେନର। ନେକ୍ସଟ which country was the runners of in the FIBA World Cup 2018 in Russia ତ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କ୍ରୋଏସିଆ। ହୁ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଏକ୍ସରେ ତ ହେଇଯିବେ କ'ଣ କନରାଡ୍ ରଣ୍ଟେଙ୍ଗ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ USSR ତ USSR ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରିଛି। ଦ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ସୋଭିଏତ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ୍ସ ଇନ୍ which year did the second Indo-Pak war take place took place ହେଲା ପାଷ୍ଟରେ ହେଲା took place ତ ଇୟର ହେଇଯିବ କ'ଣ 1965। which is the longest man-made structure in the world ତ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାଲ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା। where was the 2018 Asian game held ତ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ନେକ୍ସଟ where is the Kerala High Court is located କେରଳାର ହାଇକୋର୍ଟ କୋର୍ଟ ଅଛି ତ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କୋଚି। what should be blood in a normal adult person ତ ହେଇଯିବ 1.2 to 1.5 gallon। ନେକ୍ସଟ where is the headquarter of UNICEF located ତ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନ୍ୟୁୟର୍କ। which country became first in the world to run entirely on solar power which country become first in the world to run entirely on solar power ତ ହେଇଯିବ କ'ଣ ପାକିସ୍ତାନ। ହଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ପାକିସ୍ତାନ ଏଇଟା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ହେଲା ଦ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଟୋଟାଲି ସୋଲାର ପାୱାରରେ ଚାଲୁଛି ହେଲା। ଟୋଟାଲ ପାକିସ୍ତାନର କ'ଣ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ କେବଳ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟଟା କହିଛି ହେଲା। in case of president of India wants to resign he shall address his resignation to whom ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାହାକୁ ରିଜାଇନେସନ୍ ଦେବେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ। who has the constitutional advisor to the constituent assembly in the framing of Indian constitution ତ constitutional advisor କିଏ ହେଇଯିବେ ତ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଡକ୍ଟର BN ରାଓ। ନେକ୍ସଟ in which year India signed the Paris Agreement of Climate Change ତ ପ୍ୟାରିସ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କେବେ ସାଇନ୍ଡ ହେଇଥିଲା ତ ହେଇଯିବ 22 ଏପ୍ରିଲ 2016। which is the
फास्टेस्ट प्लांट टू रिवॉल्व अराउंड द सन तो ये कौन मर्कुरी व्हाट इज द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड ये कौन अशोक चक्र हु हैज रिटन द बुक इंडोमिटेबल स्पिरिट ये कौन एपीजे अब्दुल कलाम Which railway station of India is the first visually challenged friendly railway station? तो ये कौन मैसूर रेलवे स्टेशन Who has the authority to summon the House of the Parliament? The House summon ये करि परिबे ना President. Who has become the first female Indian gymnast to qualify for the Olympic? तो ये कौन करम कर Next. What is the official language of the Union of India under the Constitution of India? तो भारतर ऑफिशियल लैंग्वेज कौन हो हिंदी इन विच स्टेट पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड तो पोंगल फेस्टिवल कौन हो ना तमिलनाडु इन February 2015 which Indian cricket legend has been introduced into the ICC Hall of Fame तो ये जब के ना अनिल कुंबले Which is the oldest share market of India? Oldest share market of India. तो ये जो कौन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश ये जो अमरावती वर्तमान भाईजाग है Which group or organization has prepared and published the case of doing business index तो doing business index को organization द्वारा बाहर करा जाए वर्ल्ड बैंक ग्रुप नेक्स्ट हु इज द इंडियन एडवोकेट defended the case of कुलवंशम दादर एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो ये एडवोकेट हरीश सेल्वी वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर कोड अच्छी ना ब्रुसेल्स बेल्जियम द र्यूटी ब्लूटूथ कॉमन इन मोबाइल हाँ ब्लूटूथ किंग हॉलैंड ब्लूटूथ ग्रोमसम नेक्स्ट who is instituted Navjivan Trust to propagate peaceful means of attaining their Swaraj तो ये कौन मोहनदास करमचंद गांधी MK गांधी नेक्स्ट आसला इन विच ईयर भारत रत्न एंड पद्मभूषण अवार्ड वेर इंस्टीट्यूटेड तो भारत रत्न पद्मभूषण केवे स्टार्ट होता तो ये 1954 है Who is the first person to set foot on the moon on July 20, 1969 तो ये कौन नील एमस्ट्रॉन्ग on which date International Women's Day is celebrated तो March 8 Who won the Asian Continental Women's Tournament in the year 2018 तो ये जापान Which state has almond as its state tree almond को राज्यर जातीय गछ ये जो कौन जम्मू एंड काश्मीर रॉजर फेडरर प्लेस विच कंट्री रॉजर फेडरर प्लेस विच गेम ये जो कौन टेनिस व्हेन वाज फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड 1931 होता कौन सेकेंड होता जोड़ा कि गांधीजी अटेंड करते When did the do or die movement started? Do or die movement और कौन कौन पार 1942 रे कौन आसला भारत छाड़ आंदोलन Who gave the slogan तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा Give me blood, I will give you freedom. The famous slogan by Subhash Chandra Bose. Where is the WHO organization located? World Health Organization कोड अच्छी जेनेवा स्विट्जरलैंड
What is the India's literacy rate? Literacy rate of India केते हे परिबो? हला नेक्स्ट व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड रो केमिकल फॉर्मूला केते CO2. नेक्स्ट who started the matter can be converted into energy? is Albert Einstein. What is the liquid component of blood? The liquid component of blood आम कौन कहबा? ये is plasma. What is the oldest mountain range in India? तो ये Aravalli mountain range. हिमालय हूँ सबुठु newest. What is the capital of Union Territory of दादरा नगर हवेली? तो ये कौन? सिलभासा. ओके नेक्स्ट which place in India receives lowest rainfall? तो ये कौन? जयसालमर. McMahon line demarcates the boundaries between which countries? तो McMahon line को देश दीटा मध्य अच्छी. तो ये इंडिया और चाइना. Who was the last Mughal emperor? The last Mughal emperor is Bahadur Shah Jafar. When did the state of Jammu and Kashmir came under president's rule? So year is 5 August 2019. Who has been appointed as the acting chairman of EPSC? Who has been appointed as the acting chairman of EPSC? तो ये जीव अरविंद सेक्शन है. एटा गोटे प्रीवियस करंट अफेयर्स. Which country will host 45th G7 summit 2019? तो ये जीव फ्रांस. Which country's women cricket team has clinched the Asia Cup 20? तो ये जीव बांग्लादेश क्रिकेट टीम. Who is the father of geometry? तो ये कौन? Euclid. Next, who is the Indian to beat the Confucius in mathematical wizard? तो ये कौन? ना शकुंतला देवी. Amjad Ali Khan was associated with which musical instruments? तो अमजद अली खान को इंस्ट्रूमेंट सहित जड़ित. तो ये सरोद. The Great Victoria Desert is located in which country? Great Victoria Desert. तो कंट्री आसपटे कौन? ऑस्ट्रेलिया. The interesting lines, the intersection line between one maps and globes are called. तो ये कौन? Geographical grid. Who invented the ballpoint pen? तो ये कौन? Laszlo Biro. What J.B. Dunlop invented? तो J.B. Dunlop कौन इन्वेंटेड करथिले? न्यूमेटिक रबर टायर. दांडिया इज ए पॉपुलर डांस ऑफ व्हिच स्टेट? तो इज गुजरात. Who wrote the famous book with the people? तो इज कौन? नानी फाल्कीविला. Next, who played lead character in the film The Bandit Queen? तो ये सीमा विश्वास. Who wrote the line A thing of beauty is a joy forever? तो ये जॉन किड्स. The Kenish Award is given for excellence in which field? तो Kenish Award को फील्ड रे दिया जाए. तो ये कौन? फिल्म्स. नेक्स्ट, which is the richest temple of India? तो ये कौन? पद्मनाभस्वामी टेम्पल. Who founded Red Cross? तो ये हेनरी डोनाल्ड. हेलो. In 2013, the Supreme Court of India issued notice
To the ambassador of which country do not leave India without permission of Supreme Court. तो ये कौन ambassador of Italy machine. How many high courts are in India? How many high courts are in India? तो ये कौन है total 25 high courts. Next, who was the last British emperor of India? तो ये कौन जॉर्ज वी आई. In which year the capital of India was transferred from Calcutta to Delhi? तो year है 1911. The Miss Universe of 2018 belongs to which country? तो ये कौन the Philippines. Who are the director of film Padmavat and बधाई हो? तो अमित रवींद्रनाथ शर्मा होती बधाई हो आ संजय लीला बंसल हो पद्मावत. Who is the author of the book Ignited Minds and to which state belong? So he is Dr. APJ Abdul Kalam. Name the Prime Minister of Pakistan and in which year he won the Cricket World Cup for the Pakistan as a captain. So Imran Khan is the captain. Name the Prime Minister of Pakistan in which year he won the World Cup for the Pakistan as a captain. So next देखिए who is Aung San Suu Kyi and from which country she belongs to? तो ये जी कौन ना म्यांमार पॉलिटिशियन एंड ऑपोजिशन लीडर. नेक्स्ट, टू which field the Pakistan singer Ghulam Ali related? The Ghulam Ali is a ghazal singer. Name the birthplace of Subhash Chandra Bose and in which state it is? The birth state is Cuttack, Orissa. The name of the Bangladesh prior to 1971 and it was a part of which country? So ये कौन East Pakistan. Next, name the governor of RBI and he is an ex-IS cadre of which state? तो गवर्नर के ना शक्तिकांत दास जन IS ऑफिसर कोर्ट रो ना तमिलनाडु कैडर ex-IS. Who has the last viceroy of India and what is the period? The last viceroy is Lord Mountbatten. Year is 1947 to 48. Which is the longest tributary river of India and also largest lake? The Yamuna. Who was the first president of Indian National Congress? कौन ना WC Banerjee. In whose name the Nobel Prize award are given every year and to which country he belongs? तो ये है अल्फ्रेड बर्हार्ड नोबेल स्वेडेसी 1901 रु स्टार्टिंग है कौन नोबेल प्राइज. नेक्स्ट, हु इज द कैबिनेट मिनिस्ट्री फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया? द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया श्री अर्जुन मुंडा. नेक्स्ट, देखिए सोमनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो सोमनाथ टेम्पल आपणर गुजरात रे अछि. नेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल. फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इज विद्या भंडारी. द फर्स्ट वर्ल्ड कप क्रिकेट हेल्ड इन विच ईयर एंड इन विच कंट्री? तो ईयर है 1975. कंट्री है इंग्लैंड. टू विच फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स विश्वनाथ आनंद एसोसिएटेड? तो ये कौन चेस सहित विश्वनाथ आनंद एसोसिएटेड. नेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना. तो ये आपन प्राय सब चेंज हो जाइए रिसेंट आपन देखिपारे. आज पर सेंसस 2011 which state has the lowest sex ratio? तो लोएस्ट
As for census 2011, which state has the lowest sex ratio? कौन हो तो ये हरियाणा 877 पर मेल है पर 1000 मेल। जदि आपन पचारे यूनियन टेरिटोरी ताहले आसीबो कोन ना डामन एंड ड्यू। डामन एंड ड्यू केते 618 प्रति 1000 पुरुष किंतु भारत रे जदि पचारे तो केते आसीबो 943 प्रति 1000 मेन रे। ओके दिन ई इलाही रिलीजन वाज फाउंडेड बाय हुम। दिन ई इलाही रिलीजन वाज फाउंडेड बाय हुम। तो ये कौन अकबर इयर हो केते 1582। नेक्स्ट व्हिच इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कैपिटल कौन हो ईटानगर। व्हिच इज द कैपिटल ऑफ पोर्तुगाल। पोर्तुगाल कैपिटल कौन हम लिस्बन। वेयर द फेमस गिरी फॉरेस्ट आर लोकेटेड। तो गिरी फॉरेस्ट हो कौन गुजरात। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र किए वो तो ये कौन एकनाथ शिंदे 2022 रु कौन आज ए सीएम। हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनकर। हु इज द इलेक्शन सिंबल ऑफ बहुजन समाज पार्टी। व्हाट इज द इलेक्शन सिंबल ऑफ बहुजन समाज पार्टी तो ये एलिफेंट। हु रोट विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर राइटर किए ना डॉक्टर अब्दुल कलाम एंड अरुण तिवारी। फॉर विच बुक रविंद्रनाथ टैगोर विन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर तो ये कौन गीतांजलि 1900 ईयर हो कौन 1913 है। हु इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ऑथर किए चाणक्य। व्हिच प्लेस इज कॉल्ड कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया ये भुवनेश्वर। नेक्स्ट हुज क्रिमेशन साइट इज कॉल्ड एज राजघाट ये कौन महात्मा गांधी। मिहिर सेन इज एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट्स तो ये कौन गोटे लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर। व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर हो कौन केरला। व्हिच मेटल रिमेन्स इन द लिक्विड फ्रॉम अंडर नॉर्मल कंडीशन ये मर्क्यूरी। नेक्स्ट कॉड लिवर ऑयल इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ व्हिच विटामिन। विटामिन डी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स सॉरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सॉरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी है फ्लुएंट। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। फर्स्ट पीएम ऑफ वर्ल्ड श्री माभो है। मॉडर्न वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ गवर्नमेंट। हु हैज रिटन गांधीजी's फेवरेट सॉन्ग भस्नम जानतो तो ये कौन नरसिन्हा मेहता। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग सिचुएटेड तो ये न्यू दिल्ली। 1 जनवरी 2015 कौन आसला नीति आयोग आसला है। चेयरपर्सन किए जी जे पीएम आसो है पीएम ही हो कौन चेयरपर्सन आर। ये क्या रिप्लेस कला ना प्लानिंग कमिशन को नीति आयोग रिप्लेस कला। फुल फॉर्म अच्छे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। Which crop is sown on the largest area in India तो ये राइस। Who is known as the saint of guitars ये मदर टेरेसा। Which bank changed its name and the IFC code for many of its branches तो ये SBI। नेक्स्ट वेयर इज द मारियन ट्रेंच लोकेटेड तो मारियन ट्रेंच जोटा कि हास्ट माने सब गभीर जगह कोट अच्छी
सी पैसिफिक ओशन रे व्हिच बॉडी पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग सीक्रेट्स बाइल तो बाइल जूस कोड मिले ना लिवर रो व्हाट इज कोला तो कोला गोटे कौन ए बियर लाइक एर्बोरिला ऑस्ट्रेलियन मस्टुपिला दैट हैज थिक ग्रे फर एंड फीड्स ऑन द यूकेलिप्टस लीफ आल्सो कॉल्ड नेटिव बियर इन ऑस्ट्रेलिया एते किसी दरकार नहीं नेटिव बियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मन रखियाटा बेस्ट है व्हिच स्टेट इज नोन एज ग्रेनरी ऑफ इंडिया ग्रेनरी ऑफ इंडिया हो कौन पंजाब हु एडमिनिस्टर ओथ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो प्रेसिडेंट को किए शपथ पाठ करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हिच इज द लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया तो ये कौन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया हु इज द सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू फास्ट होती ट्राइबल है व्हिच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया संबर लेक है व्हिच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया नहीं तो यहाँ भूल देख देख गोटे दृष्टि ठीक अच्छे 100% ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं ये देखिए कौन लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया आउ गोटे अच्छे जोड़ा ये हूँ कौन कोस्टाल जदि कोस्टाल लगी था कोस्टाल आसता चिलिका लेक है अच्छी करेक्ट अच्छी किसी असुविधा नहीं रानीखेत इज ए डिजीज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द लिविंग स्पेसीज तो हेडा हेन्स है हु इज नोन एज फादर ऑफ आवर नेशन एम.के. गांधी हु इन्वेंटेड रेडियो मार्कोनी हु डिस्कवर्ड इंडिया भूल अच्छे हु सी रूट है रूट टू इंडिया तो आसो कौन भास्को ड गामा हु डिस्कवर्ड इंडिया नहीं है भारत को उद्भावन कर कौन करते जलपथ आविष्कार करते भारत को आसवाई इन व्हिच सिटी द हेडक्वार्टर ऑफ UNO इज सिचुएटेड तो ये न्यूयॉर्क सिटी व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ सिक्किम सिक्किम रो कैपिटल कौन हो गैंगटॉक नेक्स्ट व्हिच लेक वाज डिजाइन्ड एज द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस अंडर रामसर कंजर्वेशन ये जो कौन चिलिका लेक व्हिच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड कम्फर्ट बॉडी ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ सनलाइट विटामिन डी व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट दैट वाज लॉन्च्ड इनटू द स्पेस ऑन November 15th 2022 the Vikram S which animal was recently reintroduced in India in the Kuno National Park by the PM of India तो चीता आसला कौन ना नाम्बिबियारू चीता आना जाइथिला नेविक an equipment of global positioning system by GPS was developed by which country तो ये India which country has the longest written constitution India which high court is the oldest in India having been established year 1862 तो 1862 रे फर्स्ट हाई कोर्ट होता कोड़े ना कोलकाता हाई कोर्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NRC एंड CAA तो NRC मीन्स हो कौन नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स CAA हो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नेम द साइंटिस्ट हु डेवलप्ड द स्क्रिप्ट ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग फॉर ब्लाइंड पर्सन लुइस ब्रेल ब्रेल डे पचारे कौन गोटे क्वेश्चन ये आस कौन ना वर्ल्ड ब्रेल डे केबे हो 4th January important date which is disease of caused for deficiency of vitamin K तो क्रोनिक किडनी डिजीज CKD है विटामिन D अभाव K अभाव रे which is the lightest among gases तो किए जीव हाइड्रोजन नेम द लॉन्गेस्ट रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सोवियत R-36M
हु इज द फास्ट इंडियन टू विन ऑस्कर अवार्ड ये जो कौन भानु आथिया व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड तो ये जो कौन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशनल डे ऑफ ऑब्जर्व्ड तो कॉन्स्टिट्यूशनल डे केबे हो ना जब कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नवेम्बर 26 हो कॉन्स्टिट्यूशनल डे हु रोड द बुक इंडिया विन्स फ्रीडम बुक बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद हु विन द बुकर प्राइज 2022 फ्रॉम इंडिया फॉर द नोवेल टॉम्ब ऑफ स्टोन तो गीतांजलि श्री हु इन्वेंटेड मोबाइल फोन मार्टिन कॉपर हु इज द फर्स्ट पर्सन टू विन नोबेल प्राइज ट्वाइस ये मेरी क्यूरी है आग फैमिली समस्ते पाई हजबैंड भी पाई नेक्स्ट झील भी नोबेल प्राइज पाई हु इज द फर्स्ट पर्सन टू रीच स्पेस यूरी गाग्रीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे which is the longest railway network or line in the world तो ये कौन यूनाइटेड स्टेट्स नेम द फिल्म फॉर which A.R. रहमान गॉट ऑस्कर अवार्ड तो ये कौन ना स्लमडॉग मिलियनेयर हु won the Nobel Prize Peace Prize for 2022 तो नोबेल पीस प्राइज फॉर 2022 आलिस ब्लास्टिक Which state government won the first prize in National MSME Award 2022 तो ये गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा Who was crowned फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 तो ये सिनी सेठी Who has received the Templeton Prize 2022 फ्रैंक विज़ेक भारतनाट्यम इज द डांस फ्रॉम विच स्टेट ये जो तमिलनाडु मोहिनीअट्टम केरला ओडिसी ओडिशा छौ फोक डांस कोड़ा हो ना झारखंड हो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हु इन्वेंटेड जेट इंजिन तो डॉक्टर हैंस वोन ओयान एंड सार फ्रैंक व्हिटिल गन पाउडर के इन्वेंट करते ना चाइनीज एल्चिमिस्ट है इंटरनेट हु इन्वेंटेड इंटरनेट ना टिम बर्नर्स ली नेक्स्ट हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन तो भर्गेश खुराना होती फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन हु इज द फादर ऑफ ओशेनोग्राफी फादर किए मैथ्यू फ्रंटेन मौरी हु इन्वेंटेड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन हु इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ अर्थ तो प्रोक्सिमा सेंचुरी होची नियरेस्ट स्टार ऑफ अर्थ वेयर डज नर्मदा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम तो अमरकंटक प्लेट्यू हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर which amendment act introduced changes in the preamble to the Indian Constitution तो ये जो 42nd Amendment Act 1976 which president of India died while in office तो दी जन फखरुद्दीन अली मोहम्मद जाकिर हुसैन who organized Azad Hind Fauj मोहन सिंह between whom and in which year the battle of Haldighati was fought battle of Haldighati important 1576 जो मैंने बैटल ऊपर वीडियो देखी ना प्लेलिस्ट रे वीडियो अच्छी सियोर देखिए बुझला क्या भितर ना मुगल फोर्स लीड बाय मानसिंह आउ राणा प्रताप राणा महाराणा प्रताप भितर होता बैटल ऑफ हल्दीघाट Which river is called दक्षिण गंगा के गोदावरी रिवर Which country is the second largest populated and seventh largest area wise in the world? India, seventh world. Which king started Kumbh Mela in Allahabad? The King Harishchandra. King Harshavardhana. Bull and bear. The terms are mainly used where? Stock market. Bull and bear.
How many squares are there in a chessboard? Total 204 squares. What is the currency note in Qatar? The Qatar real hochi currency note. In which month and date we observe Earth Day? Earth Day kebe hijibo? April 22. What is the full form of IBRD? International Bank for Reconstruction and Development. What is the full form of ICAR? Important सब है द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च. जो मैंने भी पेड बेस जॉइन करिया चाहूँचंती से माने पेड बेस जॉइन करि परिबे. यूट्यूब रे 399 रो कोर्स रे आपण जॉइन करि परिबे जोटा कि आपन को बेनिफिट रहिबो. जो मैंने भी परचेस करि पारु नांती से माने पे फ्री क्लासेस आसुची. बहुत भल कंटेंट आपण पेड बेस टी अधिक सुविधा पाई परिबे हैला. आउ जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट रे पढ़िया चाहते तो प्लेलिस्ट आम वीडियो अच्छे आपड़ से वीडियो देखिपारे. जेकोसी टॉपिक आप सर्च करेंगे जदि से वीडियो आप देखिए. जदि आपको कौन टॉपिक वीडियो रिक्वायरमेंट तो आप कमेंट बॉक्स रे गोटे पिन करेंगे. रिसेंट वीडियो कमेंट बॉक्स रे पिन करेंगे. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. What is the capital of the state of Meghalaya? Shillong. Which state of India is known as Devbhumi? Devbhumi क्या कहवा? उत्तराखंड. Who is the author of Anand Math? तो ये जो कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. Which Indian athlete is known as the Queen of Indian Track and Field? तो ये जो कौन ना PT उषा. In which year did India win the first cricket World Cup? The first cricket World Cup is 1983. Kumbh Mela is celebrated after a gap in how many years? तो कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष रे हुए. Which vitamin helps in clotting of blood? Blood clotting vitamin A. Which is the largest village in Asia? तो Ghamar village is largest village in Asia. Which incident brought an end to the non-corporation movement? तो चौरी चौरा इंसिडेंट है. चौरी चौरा इंसिडेंट. इंसिडेंट डेट मन अच्छी समस्त 4 फेब्रुआरी केते 1922 है. 4 फेब्रुआरी 1922. Which program meets the credit needs for poor women? तो राष्ट्रीय महिला कोष. Which is the largest commercial bank in India? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. 1955 है year. Which Mughal empire transferred the Mughal capital from Agra to Delhi? तो ये जो के शाहजहाँ. Which country has passed the free trade agreement? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सहित का सहित ना यूनाइटेड किंगडम सहित. Which metal is used for making filament? तो फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट कहीं तैयारी? टंगस्टन मेटल. नेक्स्ट मोरबी ब्रिज ऑन द माछु रिवर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो मोरबी ब्रिज कोठे अच्छी? ये जब गुजरात. एंटेमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज व्हाट? इंसेक्ट्स. एंटेमोलॉजी हूँ कौन? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. हिटलर्स पार्टी इन जर्मनी which is in power in 1933 is known as what? तो नाजी पार्टी. हिटलर पार्टी कौन हो? नाजी पार्टी. Versatile Bollywood actor Irfan Khan had won national award for which movie? तो ये कौन? पांसिक तोमर. नेक्स्ट which is the fastest train in the India? तो ये कौन? वंदे भारत एक्सप्रेस. 160 km maximum speed. Which mountain peak of India is known as 5 treasure of snow? तो ये कौन? कांचनजंगा. Upon whose death the famous line "the light has gone out of our lives" was spoken by Jawaharlal Nehru? ये जो महात्मा गांधी. Chief Justice of India Dr. D.Y. Chandrachud is the which number of Chief Justice of India? तो ये जो 50th नंबर.
Which country assumed the presidency of G20 countries in 2022? ये जो इंडिया. Which Indian ruler signed the annexation of Kashmir into India? तो से समय जो साइन करथिले जे तांको नाम थिला महाराज हरि सिंह. Which city plays host to the International Children's Film Festival? तो सिटी है जो कौन कोलकाता. Who is the Governor General of India during the Sepoy Mutiny of 1857? तो लॉर्ड कैनिंग होचनी कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सिपाही म्यूटेंट समय बा सिपाही विद्रोही समय लॉर्ड कैनिंग थिले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. द प्लानिंग कमिशन वाज डिजॉल्व टू फॉर्म व्हिच बॉडी? तो ये जो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 है. थिंक टैंक है नीति आयोग हूँ कौन थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट. व्हिच इज द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री? तो सबुठारु कोटारे अधिक चाकरी माने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मीन्स कौन सबुठारु अधिक जॉब को एजेंसी दिए है. तो ये हो कौन द इंडियन रेलवे. व्हाट इज द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज कॉल्ड? तो ये जो एस्ट्रोनॉमी. व्हिच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड बृहद गंगा? बृहद गंगा के ना गोदावरी. Who is known as the Grand Old Man of India? Grand Old Man of India is दादा भाई नारोजी. आउ ये ही फास्ट कौन करथिले ना इकोनॉमी एस्टिमेट करथिले हैला दादा भाई नारोजी. द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड इट्स फर्स्ट सीजन इन व्हिच ईयर? तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो फर्स्ट केबे हेतिला ना 1946 रे स्टार्टिंग हेतिला. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम बिहाइंड बार्स? फ्रीडम बिहाइंड बार्स रो बुक रो ऑथर के किरण बेदी. द चाइनामैन इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट्स? तो ये जो क्रिकेट. व्हिच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? तो रेड प्लैनेट इज कौन मार्स. नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ? तो ये जो डायमंड. फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड? तो सचिन तेंदुलकर होचंदी फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन जे कि भारत रत्न पाइथिले. नेक्स्ट नेम द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया? नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज एलिफेंट. नेम द स्मॉलेस्ट कंट्री? तो वाटिकन सिटी. व्हिच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजन बाय पॉपुलेशन? तो क्रिश्चियनिटी होची कोन हाईएस्ट पॉपुलेशन होची क्रिश्चियनिटी हैला वर्ल्ड कथा कहै छला पूरा विश्व रे. Which continent has highest number of country? तो अफ्रीका रे कौन अच्छी हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्री अच्छी. Which animal is known as sheep of desert? तो sheep of desert किए जीवो camel. Which is the southern most city of India? southern most city कौन है जीवो सिटी पचार चेट है पॉइंट पचानी. तो ये जीवो थिरुवनंतपुरम. Which color symbolize peace? Which color symbolize peace? Which color symbolize peace? तो ये कौन ब्लू. नेक्स्ट नेम द बर्ड दैट लेज द लार्जेस्ट एग? ये कौन ऑस्ट्रिच. व्हाट टाइप ऑफ गैस इज ऑब्जर्व बाय प्लांट? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड. हाउ मेनी इयर्स आर देयर इन 1 मिलेनियम? तो 1000 ईयर रहिबो गोटे मिलेनियम रे. हु इज द डायरेक्टर ऑफ फिल्म काश्मीर फाइल्स? तो इज विवेक अग्निहोत्री. नेक्स्ट हु इज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी? बाबर. हु वाज द फाउंडर ऑफ रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री? तो रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री धीरूभाई अंबानी. हु वाज द फर्स्ट इंडियन शेड्यूल्ड ट्राइब वुमेन बिकम गवर्नर ऑफ स्टेट? ये जो सरोजिनी नायडू. हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये जो 22 लैंग्वेज है. शेड्यूल है कौन 8. हु हैज रिटन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लिखते ना पंडित जवाहरलाल नेहरू.
व्हिच इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड तो न्यूजीलैंड कैपिटल कौन हो ना वेलिंगटन पीवी सिंधु इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स पीवी सिंधु को खेल सहित जड़ित हो बैडमिंटन ऑन व्हिच डे नेशनल लॉ डे इज ऑब्जर्व्ड तो नेशनल लॉ डे हो मे 1 लेबर डे भी कौन हो मे 1 व्हाट इज द करेन्सी ऑफ जापान तो जापानीज येन हूँ करेन्सी इन व्हिच सिटी मीनाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड तो मीनाक्षी टेम्पल कौट आसब मदुराई इन व्हिच टाउन ऑफ गुजरात महात्मा गांधी बॉर्न तो महात्मा गांधी गुजरात कोठे जन्मग्रहण करते तो पोरबंदर व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर राइट टू इक्वालिटी तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 नेक्स्ट रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन तो रिकेट्स हो विटामिन डी अभाव रे हु एवोलाइज्ड द कस्टम ऑफ सती फ्रॉम इंडिया तो ये कौन लॉर्ड विलियम बेंटिंग हु इज द फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन तो ये कौन ना कल्पना चावला व्हिच मुगल रूलर एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ आलमगीर तो आलमगीर किन टाइटल होता ना औरंगजेब व्हाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द फेल्योर ऑफ व्हिच प्रपोजल तो ये क्रिप्स मिशन है ड्यूरिंग व्हिच मूवमेंट वाज महात्मा एडेड बिफोर गांधीजीज नेम तो महात्मा के देते ना रविंद्रनाथ टागोर देते तो कौ मूवमेंट पूर्व तो ये हूँ चंपारण सत्याग्रह पूर्व द रिवर ऑफ गंगा एमर्ज फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड एंड्स एट व्हेयर बे ऑफ बंगाल व्हिच इज द लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया तो लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग स्टेट किए ना गुजरात व्हिच माउंटेन रेंज डिवाइड्स द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया नॉर्थ और साउथ इंडिया को किए डिवाइड कर विंध्य हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे हूँ परमानेंट है टेम्पोरारी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा व्हिच क्रिकेट हैज बीन अनाउंस्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड क्रिकेट तो युवराज सिंह वर्तमान भी तो 2024 T20 वर्ल्ड कप ब्रांड एम्बेसडर होती युवराज पाजी ऑपरेशन ब्लैक फेस इज एसोसिएटेड विथ तो ये कौन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल ओके नेक्स्ट व्हिच इज द हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया तो हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट हो यूपी जनगणना अनुसार कौन 19 पॉइंट समथिंग केते अच्छी करोड़ है नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली तो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ UNGA है विजय लक्ष्मी पंडित द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया तो ये जो कहते ना 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया हु एक्सप्लेन्ड ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम तो किए ब्लड सर्कुलेशन फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन करते विलियम हार्वे व्हिच सॉल्ट फाउंड इन बोन इन लार्जेस्ट अमाउंट तो कैल्शियम फॉस्फेट कौन हम लार्जेस्ट अमाउंट फाउंड हम बोन रे हु विट्रेड सिराज उद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी इन बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 मीर जाफर who attend second round table conference as a representative of Congress तो ये जो कौन महात्मा गांधी नेक्स्ट who was responsible for the integration of Indian princely states तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल who was called as जिंदा पीर और लिविंग सेंट इन मुगल इंडिया तो ये जो कौन औरंगजेब what is most evident element in the earth crust what is the most evident element in the earth crust तो ये जो कौन ऑक्सीजन तापर आसियो सिलिकॉन है
ऑक्सीजन हो कौन 46.1%। तापर सिलिकॉन आसो के 28.2%। तापर आसो एल्यूमिनियम आयरन। ओके व्हिच इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। पृथ्वीर छात आम क्या कहवा तिब्बतियन प्लेटू। Which country is known as land-locked country? तो land-locked country किए जीवो ना काजाकिस्तान। Which is the third largest country in population after China and India? तो थर्ड है किए यूएसए, फास्ट चाइना, सेकेंड इंडिया। 2011 रिपोर्ट अनुसार है एवं आसनी आसिले आम किए अच्छी कौन जना पड़ो। Which protein helps in DNA winding? The histone protein. Which combination of paternal chromosome results in female? The female पे कौन आसीबो XX chromosome हला। Approximate lifespan of parrot is how many years? Parrot रो lifespan केते ना 10 रो 15 years. Which vitamin deficiency causes disease of night blindness? तो ये जो vitamin A deficiency. Which is the largest artery in human body? तो ये जो कौन द aorta. What is the pH value of natural water? pH value of natural water is 6.5 to 8.5. Next, what is the full form of DDT? DDT रो full form कौन? तो ये जो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। Which planet is nearest to the sun? Mercury है जीवा। तापर आसे Mercury, Venus हला। Human Right Day is observed on which date? The Human Right Day आसीबो 10 December. The UNO established in which year? The UNO होबो केते 1945। Next, what is called the line demarcating boundary between India and China? तो इंडिया और चाइना भीतर बाउंड्री लाइन कौन हम मैकमोहन लाइन। फाइन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ व्हिच एम्पायर? तो ये जो चंद्रगुप्त II। हु इज नोन एज द इंडियन नेपोलियन? ये जो समुद्रगुप्त बाय VS स्मिथ। तो VS स्मिथ ताको कौन करते इंडियन नेपोलियन बोली कहते। 1 rupee notes bear the signature of whom? तो 1 rupees नोट जी आपणर इंडियन गवर्नमेंट प्रोड्यूस करछि जोटा कि फाइनेंशियल सेक्रेटरी रो सिग्नेचर रहिबो। बाकी जति रुपीस रहिला से होछि कोन गवर्नर रो सिग्नेचर रहिबो आरबीआई गवर्नर को। ओके व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे 2023? तो ये योगा फॉर वासुदेवम कुटुंबकम। Which city host a world class shopping festival in 2023? तो ये दिल्ली। Who become youngest bowler to take 400 T20 international wickets? तो ये जो रशीद खान। Who won the men's singles title of Australia Open 2022? तो ये राफेल नाडाल। The filament of electric bulb is made up of? ये जो टंगस्टन। Who invented telephone? टेलीफोन के बाहर करते ना अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। Who is the name of brightest planet in our solar system? तो ब्राइटेस्ट सोलार सिस्टम कौन हो ना भेनस हो। इवनिंग स्टार भी आम कहीपर मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार है हॉटेस्ट प्लानेट। ओके हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन हेक्सागन? 6 साइड्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट? ईयर। हाँ यहाँ टे भूल कौन जे व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर नहीं व्हाट इज द लाइट ईयर कौन? लाइट ईयर गोटे डिस्टेंस मापा जाए है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू मेक ए स्पीच इन हिंदी बिफोर द यूएन जनरल असेंबली? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी। हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक? फेसबुक रो फाउंडर किए जी? मार्क जुकरबर्ग। वेयर इज द विवेकानंद रॉक मेमोरियल लोकेटेड? तो ये कन्याकुमारी।
Which party was founded by Subhash Chandra Bose in the year 1939 after he broke away from the Congress? There is your forward block. Which is the executive head of the state government? The executive head of the state government. So ଆସିବ governor. What is the SI unit of charge? SI unit of charge ହେଇଯିବ କ'ଣ? Coulomb. Next, what is the SI unit of sound? Sound ର କ'ଣ ହେଇଯିବ? Hertz. What is the name of acid in graphs? The tetric acid ହେବ ଆପଣଙ୍କର graphs. Which vitamin is obtained from sun rays? The sun ray ରୁ କୋଉ vitamin ଆସୁଛି? Vitamin D. Which layer of atmosphere used for telecommunication? The telecommunication ପାଇଁ କୋଉ layer atmosphere କୋଉ layer ଦାୟୀ? ये जो ionosphere. Next, what is the study of weather is called? Study of weather is meteorology. What is the coldest place on earth? Coldest place of earth is East Antarctica Plateau. What is the world's largest island? Largest island is Greenland. What is the author of the autobiography of Yogi? तो ये जो कौन परमहंस योगानंदा है योगानंदा. नेक्स्ट, which is outer most layer of earth? Outer layer of earth कौन जो crust. Who won the Asia Cup 2022? तो ये जो श्रीलंका. Which is the largest steel bridge in the country? ये जो कौन Bogeyville Bridge. Who is the present Prime Minister of United Kingdom? DC Sunak. Next, which is the capital of Andaman and Nicobar? So it is Port Blair. The national emblem of our country has been taken from which place? So it is Ashoka pillar inscription, Sarnath, Uttar Pradesh. से जोड़ा अच्छी बर्तमान है जय जंतिल कमिटी is related to. So ये जो infant mortality rate. Who had won the ICC Cricket World Cup in the year 1992? So ये जो Pakistan. Next, who scored fastest double century in ODI cricket? So ये जो ईशान किशन. How many major ports are there in India? 13 major ports. How many airports are there in India? 486. How many railway zones are there in India? How many railway zones in India? So ये जो कौन 19 zones. Next, संतोष ट्रॉफी को स्पोर्ट्स सहित जड़ित फुटबॉल. Which one is the last skanda of the epic Ramayana? Skanda of the epic Ramayana. Uttara skanda hala. What is the name of Lord Krishna's conch shell? कृष्ण शंख कौन को शंख कहला? पंचजनाय शंख. Who invented dynamite? Alfred Nobel. Next, what is the full form of CNS in the relation to our body? The central nervous system. Who is the captain of Indian football team? Sunil Chhetri, जी कि तांकर फाइनल मैच बाय रिटायरमेंट मैच जून 6 रे बोते शायद खेलिबे हला. OS means कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम. द फेमस टूरिस्ट प्लेस ओटी कोड अच्छी तमिलनाडु रे. नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा? तो लोकसभा टर्म के 5 ईयर. Which mineral is used in pencil? पेंसिल रे कौन आसीबो? ग्राफाइट आसीबो. ट्विटर का द्वारा ओन? एलन मस्क. Who is the first Muslim president of India? तो जाकिर हुसैन है कौन फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. GST स्टैंड फॉर कौन? गुड्स सर्विस एंड टैक्सेस. नेम द लार्जेस्ट मैमल. लार्जेस्ट मैमल है ब्लू व्हेल. बिल गेट्स को कंपनी फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट. Which is the first month in India's national calendar based on the Sakaira? तो चैत्र हो कौन फर्स्ट मंथ. कौन दे कैट्रैक्ट इज एसोसिएटेड विच ऑर्गन? आई.
नेक्स्ट व्हिच स्टेट विल होस्ट 2023 हॉकी वर्ल्ड कप तो 2023 हॉकी वर्ल्ड कप कोठी आयोजन होता ओडिशा रे वांकेड स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र नेक्स्ट ए ग्रैंड स्टैच्यू ऑफ व्हिच फ्रीडम फाइटर वाज अनवील्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन 8 सेप्टेम्बर 2022 नियर इंडिया गेट इन न्यू दिल्ली तो इंडिया गेट न्यू दिल्ली पाखे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन होता अनवील होता स्टैच्यू यूपीआई स्टैंड फॉर कौन यूनिफाइड पेटीएम इंटरफेस व्हिच पार्ट ऑफ द फिश इज नोन एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो फिश रो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन हो ना गिल्स व्हिच एनिमल कैन नॉट वॉक बैकवर्ड कंगारूस ए सेक्टर बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड लाइन्स इज नोन बाय व्हिच नेम कौन हो पार तो जो गोरी है नेक्स्ट दामिनी ए व्हाट्सअप सर्विस फॉर वुमेन सेफ्टी इज स्टार्टेड बाय व्हिच स्टेट तो ये जो यूपी द फेमस क्यूटो ए टायरिस्ट विथ डेस्टिनिटी तो ये जो जवाहरलाल नेहरू हु स्टार्टेड चिपाको आंदोलन के ना चांदी प्रसाद भट्ट इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडियन हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड हॉर्नबिल कोडे जीव नागालैंड नेक्स्ट व्हिच इज द ओनली एक्टिव वोल्केन ऑफ इंडिया तो ये जो बेरेन आइलैंड अंडमान एंड निकोबर रे अच्छी है व्हेन इज गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड तो ये जो कौन 25 डिसेम्बर 25 डिसेम्बर है वेयर इज द क्रिस्ट द रिडीमर लोकेटेड ब्राजिल ए पर्सन हु स्टडीज अबाउट स्किन डिजॉर्डर्स इज कॉल्ड डर्माटोलॉजिस्ट है स्किन ऊपर स्टडी करे से डर्माटोलॉजिस्ट व्हिच गैस इज नोन एज लफिंग गैस तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है व्हिच वाज द फर्स्ट टॉलकाई फिल्म ऑफ इंडिया आलम आरा नेम द डेंसेंट जंगल इन द वर्ल्ड डेंस है घंच जंगल सब कोड़ाली 50 द अमेजन फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट व्हिच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन द स्टेप्स हूँ कौन ह्यूमन बॉडी जोटा कि कानर अच्छे रेडी फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स नेशनल फ्रूट ऑफ बांग्लादेश एटा पचारूला जैक फ्रूट इम्पोर्टेंट प्राय एग्जाम पचारे है व्हिच इज द इंडियास मैपिंग सैटेलाइट हूँ कौन भुवन लाइट व्हिच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्ट्रिक कार शेयरिंग प्रोग्रामिंग सिंगापुर नेक्स्ट व्हिच कंट्री लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड है कौन चाइना व्हिच कंट्री डज इंडिया एक्सपोर्ट द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ आयरन ओर ये जो कौन चाइना व्हिच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन इन ह्यूमन बॉडी तो पैनक्रियाज कौन करिवो ना इंसुलिन प्रोड्यूस करिवो व्हिच विटामिन इज नीडेड फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड है कौन विटामिन के नेक्स्ट इन व्हिच फेमस केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये केशव नंद भारती केस व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स फंडामेंटल राइट को पार्ट अच्छी पार्ट 3 रे व्हिच विटामिन इज नॉट फाउंड इन एनी नॉन वेजिटेरियन फूड तो ये कौन विटामिन के नेक्स्ट व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ बायोगैस तो बायोगैस रो मेन गैस कौन हो ये मिथेन है मिथेन नेक्स्ट व्हिच एलिमेंट इज ए डायमंड मेड ऑफ तो डायमंड कहीं तैयारी कार्बन रोड एलिमेंट ना व्हाट डज द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम तो ओजोन लेयर कहीं आमती प्रोटेक्ट करे यूवी रे अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन व्हिच ईयर फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड तो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम के 1930 नेक्स्ट व्हेन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टाब्लिश्ड तो ये 1950 है सुप्रीम कोर्ट पचार ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ वाज सॉन इन एज द व्हिच नंबर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 50th
हु कन्सिडर एज द फादर ऑफ मॉडर्न लीगल एजुकेशन इन इंडिया। तो यहाँ कह कौन ना रामकृष्ण माधव मेनन। हु इज इंडिया फास्ट एंटोनी जनरल MC Sitleff। Which country in the world first given voting right to women is New Zealand। Which lake is the deepest lake in the world is Lake Baikal। India first action of 5G spectrum which telecom service provider emerged as the largest bidder is Reliance Jio। Name the current chairperson of the National Human Rights Commission। Name the current chairperson of the National Human Rights Commission किए अरुण कुमार मिश्रा। Name the present chief of the Army Staff of India किए बे आके रिटायर नहीं गले वर्तमान किए अच्छा वर्तमान जनरल मनोज पांडे है। लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया YV चंद्रचूड़। YV नहीं DY चंद्रचूड़। लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एटा DY चंद्रचूड़ मार दे ठीक अच्छे। YV यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ है। YV चंद्रचूड़ मीन्स यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। Where is the largest temple in the world? Largest temple कौन अंगोर वाट। Simla agreement signed between Prime Minister of Indira Gandhi and which President of Pakistan? So Zulfikar Ali Bhutto। Next, India has Lifo Lake boundary issue with which neighboring country? So Lifo Lake boundary Nepal country सहित associated है। Who is the shortest serving Prime Minister of India? तो ये कौन ना गुलजारी लाल नंदा। Who was the first chief election commissioner of India? तो ये सुकुमार सेन। Where is the T20 World Cup 2024 is scheduled? तो वेस्ट इंडीज आउ USA रे चली। Who is the most host country of Olympic 2024? तो पेरिस ऑफ फ्रांस। प्रीवियस होता कौन ना टोकियो। Which river flows into Chilika Lake? तो दया रिवर हम कौन चिलिका रे पड़ी। The newly appointed Prime Minister of United Kingdom Rishi Sunak belongs to which political party? तो इज Conservative Party। Who is the first female speaker of Lok Sabha in India? तो इज मीरा कुमारी। कुमार ना एटा कुमारी है मीरा कुमारी। मीरा कुमार हाँ। Who is the longest serving speaker of Lok Sabha? तो इज बलराम झाकर। Who is the highest run score in the T20 World Cup 2022? ये विराट कोहली। The NBA league is associated with which sports? NBA league कौन हो बास्केटबॉल सहित associated। Next, which state of India largest producer of chromatic? Largest producer of chromatic है ओडिशा। Who is the successful director of Pan India मूवी RRR released in 2022? तो डायरेक्टर किए थे ना SS राजमौली। Which state or UT is the host of the Purple Fest celebrating diversity? is Goa। The Pune Pact was signed between Mahatma Gandhi and whom in the Yerwada Central Jail Pune? is दादा Dr. Bhattacharya B.R. Ambedkar। हाँ द फाइनल T20 2022 cricket World Cup match was played in which stadium which is also locally known as the G in the Australia? तो इज कौन द मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड। What is the largest optical telescope in the space? Grand Telescope Canarias। Name the official sponsor of Indian hockey team since 2018? तो ओडिशा गवर्नमेंट रहिबो होला। नेक्स्ट, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन? तो वोलोदिमिर जेलेंस्की। वर्तमान एक्सटर्नल मिनिस्टर किए अच्छा भारतर? जयशंकर एस जयशंकर है।
नेक्स्ट हु वाज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम होमी जहांगीर भाभा से भाभा होचंदी कोन फादर ऑफ इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किए हो पारियो मन रखियो है मिसाइल वुमेन होचंदी कोन टेसी थॉमस इंपोर्टेंट है मेन पचारि कर दो वुमेन पचारे करिया पड़ियो है टेसी थॉमस नेक्स्ट द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स किए हे प्रेसिडेंट व्हाट इज द मॉनेटरी यूनिट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया मनी कौन हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एडल्फ हिटलर मे काफ नेक्स्ट हाउ मेनी रिंग्स ओलंपिक सिंबल हैज टोटल ओलंपिक सिंबल रे केतरा हां रिंग केतरा 5 रिंग्स नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पान परमानेंट अकाउंट नंबर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफआईआर फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तब लिखला कौन ना करेंट रोड यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ विच मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक डाइट द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट समय हु इज नोन एज मोजार्ट ऑफ माड्रास ये कौन AR रहमान नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ COVID-19 वैक्सीन टू बी डेवलप्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR तो ये कोवैक्सीन which month has been observed as the adoption of awareness month by Central Adoption Resource Authority is November X गरुड़ा शक्ति एक्सरसाइज गोटे बायलेटराल एक्सरसाइज एटा को देश भितर हुए तो एक्स गरुड़ा शक्ति हो इंडोनेशिया और इंडिया और इंडोनेशिया नेक्स्ट इंडिया's first gold ATM has been inaugurated in which city गोल्ड ATM कोड हो ना हैदराबाद हु हैज़ बीन नेम्ड एज द 2022 पर्सन ऑफ द ईयर बाय टाइम्स मैगजीन तो ये कौन ना प्रेसिडेंट जेलेंस्की है यूक्रेन प्रेसिडेंट हु एक्सप्लेन्ड ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम विलियम विलियम हार्वे which hormone regulates glucose in blood तो ये जो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन which is the largest desert in India third desert fundamental duties are mentioned in which article of constitution of India तो article 51A तो ये थिले आज हमर किछि प्रीवियस ईयर स्टैटिस्टिक जीके जदि आपन वीडियो भल लागिस ताले वीडियो लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करिवे पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे से पर्यंत विदा दियंतु जय हिंद वंदे मातरम।